Hi everyone, I am Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering in IIT Kanpur, and I welcome you all to the fourth lecture of Haloalkanes and Haloarenes in Chemistry of Class 12th. So in the previous lectures, we discussed about the preparation of haloalkanes and haloarenes through different methods in detail. And we also discussed about the physical properties like density, solubility, boiling points, and melting points. But we had not yet done the few examples. So today I will start the session by doing several examples which are related with the preparation and the physical properties. So let's start. Okay. So the first example says this is the alcohol. This is SOCl2. This is the thionyl chloride. We discussed this in one of the preparation methods. So what will this reaction be? Like what will be the product of this reaction? So again, we know here that the alcohol, whenever they react with the thionyl chloride, they will always yield the chloride. I mean, this Cl from here will go and join over there, right? So our product would be the ring. The ring would be same. Then this OH group would be replaced by this Cl, and here we get the two gaseous products, that is SO2 and HCl. And we also discussed that these two gaseous products, they are easily escapable, and so that is why this is the most preferred reaction in the category for the preparation of haloalkanes from the alcohol. Okay, now we'll move on to the next one. Here we have this alkene and we have this benzene ring, and we have this our halogen Br2, that is bromine, in UV. So we studied that whenever alkanes they react with the halogens in the presence of UV light or heat. So what happens is the hydrogen atoms they are replaced by the hydrogen atoms are replaced by the halogen atom. Here also बिल्कुल same ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 and CH3. Sorry, this would be CH2 because one H would be replaced, and here it would be Br in place of one hydrogen atom, and our rest of the molecules would be same. Here is NO2. Or in this case, some other product can also be there because we have here this second hydrogen can also replace, right? I'm saying that this Br can also get attached to the second carbon here and not to the first one. So one chance can also be there, and the rest of the molecule will be same. So these were the two products which are possible for this reaction. Now coming to the other one, we have this ring. This is not a benzene ring, so this structure is not toluene. Okay, in toluene we have benzene ring, and above that we have CH3, and then it is reacting with HI. So what the product would be? So here we have to see that this is a double bond, and we know that we had discussed that this whenever the alkenes they react with the hydrogen halide, what the product would be? This double bond, this unsaturation has to be removed by these halides, and so this double bond will be removed, and on both the carbons, on each carbon, one hydrogen will be attached and one halogen will be attached. But again, here you have to remember that whenever this alkene and hydrogen halide reaction is there, we always have to follow the Markovnikov's rule. If some solvent is not used, like ZnCl2 we discussed, that whenever in presence of peroxide we discussed that this Markovnikov's rule it gets reversed and just the opposite case happens. But here we don't have the peroxide, so our product would be simple this, and here only I will get attached following the Markovnikov's rule. Why? Because see, here there are two possibilities for the attachment of iodine. This one is this carbon,
and the other one is this carbon. ठीक है, this carbon and this carbon. Fine. So we have to look at that carbon which has lesser number of hydrogens. ठीक है, so the carbon which will have less number of hydrogens, in that carbon hydrogen will get attached. ठीक है, so see in this carbon we have a double bond. इसका मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है. नो, नो हाइड्रोजन. सो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे I आ जाएगा. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर. Now moving on to the other reactions. Now again this is you will have to remember key. See in exams what happens is uh, the instructor can give you a very complex molecule, complex looking reactant, but only you have to see that what kind of reaction is happening. And like again agar if there is some double bond present and there is a hydrogen halide and उस double bond के बाकी का जो structure है that is very complex. ठीक है, तो what happens is sometimes students they get scared by looking at that structure because that is itself is very complex and they think that what the product would be. They don't know the reaction. But यहाँ पे क्या होता है कि you just have to look at that double bond. उस double bond का unsaturation हटाना है, वहां पे हाइड्रोजन और हैलोजन लगाना है एंड बाकी का स्ट्रक्चर विल रिमेन एज इट इज. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज NaI and so you must be remembering that this NaI or Ki it is used in the single stream reaction. So this is a single stream reaction. Simple double substitution. Bromine, heat or UV light. So UV light, whenever there is a presence of UV or heat, you always have to remember कि there will be a formation of a free radical. ठीक है, free radical हमेशा UV light के ही presence में बनता है. So यहाँ पे जो bromine होगा ना, that will get separated, like that will Br2 will get separated into two Br free radicals and it will get attached to the this double bond वाले carbons पे. So again the unsaturation would be removed and here we have no rule because both the bromine atoms they are similar. Bromine free radicals they are similar and so this will be the product. Fine. So these were few examples and then there is this question related to the physical properties that says that like we have been given a set of compounds and we have to arrange those compounds in the order of the increasing boiling point. So the first set is bromomethane, bromoform, chloromethane and dibromomethane. So these are the four compounds we are given which are given to us and we have to arrange these compounds in the increasing order of their boiling point. So first what we will do is first सबसे पहले तो it's advisable to write these compounds in the in a structural form or their formula form. You know that becomes easier for us to analyze or you know just to see like how many carbons are there, how many hydrogens are there. So first we will write the formulas for these compounds. Bromomethane, that says that we have a methane molecule. So one carbon, CH4, and one bromine is there. So this is CH3Br. Okay. And bromoform is a common name for a compound in which three bromine atoms are there. So only one H would be there and three bromine would be there. Okay. Chloromethane. This has then chlorine attached to it. And this is dibromomethane. So again one carbon and dibromo. So it is two bromine, CH2Br2. Okay. So these are the chemical formulae. And so now we can compare these compounds easily. So
when we were discussing about the boiling points, we discussed several points uh, like the boiling points they increase with the increasing molecular mass. Why? Because whenever the mass increases, the molecular mass increases, there is a greater van der Waals forces of attraction are there, and so हमें ज्यादा energy देनी पड़ती है उस forces of attraction को तोड़ने के लिए, ठीक है? So whenever the molecular mass will increase, so the boiling point will also increase, ठीक है? So this is the main thing. So यहाँ पे let me write it. You will remember. This is the molecular weight or the molecular mass increase. So the boiling point will also increase. अब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट इन 4 कंपाउंड्स में अप्लाई करना है. कैसे? लेट्स सी. अब देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सब में सेम है, सो दैट इज द सिमिलैरिटी. वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस. हाँ, बट ब्रोमीन और Cl मीन द टाइप ऑफ हैलोजन इज डिफरेंट इन ऑल द 4. ठीक है? तो देखो, अब द ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू देयर साइज और यू कैन से द मॉलिक्यूलर मास. द ऑर्डर इज FCl, Br and I. F ka, the F has the least molecular mass, and then Cl. So this Cl, we have only one compound, which is CH3Cl. ठीक है? तो first this will have the least molecular mass and so the least boiling point. So first we will write this. CH3Cl is the least boiling point. Then we have bromine. अब bromine में क्या difference है कि बाकी like the rest of the 3 compounds, the difference is clear that all these they have the different number of bromine atoms. So this one has the first one has the least number of bromine atoms. It is only 1. So we will put it over here. The second number. ठीक है? अब जब Br like number of halogen atoms जब बढ़ेंगे, so the molecular weight भी बढ़ेगा and so the boiling point भी बढ़ेगा. So CH3Br, CH3Br, sorry, it should be CH2, CH2Br2 and CHBr3. ठीक है? So in सब the molecular weight के like we have arranged these compounds in the according to the molecular weight, and so we have got the arrangement according to the boiling points also. ठीक है? Now the one more question we will do about this. We have the another set given to us is 1 chloropropane. ठीक है? Then isopropyl chloride and then 1 chlorobutane. Fine. So first you will write down their chemical formula. So 1 chloropropane. Propane means 3 carbons. 1, 2, 3 and 1 वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है. So this is chlorine. ठीक है? We have 1 chlorobutane also. So 4 carbons here and 1 chlorine at this point. Isopropyl chloride. So this is isopropyl chloride. Let me just check. I'm not sure about this. Just give me 1 minute. Okay, yeah, it's right. So these are all the molecular, the chemical formulae for these compounds. And now we will just analyze whatever we learned in the boiling point section. So for the alkyl halides which contain the same halide, because here we have all chlorine. ठीक है? तो halogen तो same ही है सब में. So this is the similarity case. The boiling point will increase with the increase in the alkyl chain. क्यों? क्योंकि जब alkyl chain बढ़ेगा, alkyl chain मतलब the number of carbon atoms. जब whenever the number of carbon atoms will increase, molecular weight will increase and the boiling point will increase. ठीक है? So one thing is clear that both these compounds they have 3 carbon atoms and this one has 4 carbon atoms. So this last one, that is 1 chloropropane, will have the highest boiling point. That is clear. Now we have to arrange the first two. Now we also know that the boiling point decreases with the increase in the branching.
ठीक है, तो इन द सेकेंड केस वी सी दैट द ब्रांचिंग बढ़ गया है ना, मतलब Cl जो है यहाँ पे आ गया है, पहले जो था वो स्ट्रेट चेन था, ठीक है Cl, अभी the branching has increased and Cl is over here in the second carbon attached to the second carbon. ठीक है, तो इसका मतलब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्योंकि एक आइसोमर है, that's why branching is more and so the boiling point will be less. ठीक है, तो एक तो देखो, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है while arranging these compounds, and another thing that we learned is uh, boiling point decreases with the increase in the branching. तो ब्रांचिंग जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, ठीक है, तो अभी हमें इसको भी अप्लाई करना है. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हैज मोर काइंड ऑफ ब्रांचिंग बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन, बिकॉज इट इज आइसोमर, एंड सो इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. ठीक है, तो इफ वी नेम देम एज ए, बी एंड सी, का मतलब है कि जो बी है ना दैट विल हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन वी विल हैव ए, and then we will have C, क्योंकि C में number of carbon atoms are more. So this was all for the questions or for the examples. Now we will be moving on to the next section, which is the chemical reactions which are related or which are involving the haloalkanes. So we are studying this because see, when other reactions which involve haloalkanes as the reactant. So now we'll be able to learn that which reagent we have to use to form some other compound using those haloalkanes or the alkyl halides. मतलब कि what, like this indirectly it means that we are learning about the applications of alkyl halides, कि उन alkyl halides को कौन से reagent से हम react करवाएंगे and what product can we produce or what product can we manufacture using these alkyl halides. So chemical reactions of haloalkanes. I am not writing uh, I am not writing haloarenes over here because उसके लिए हम बाद में उसके अलग से पढ़ेंगे, because these reactions जरूरी नहीं है कि they give us the same product. I mean the haloalkane and the haloalkene, इनके लिए general reaction होना is like it's not a compulsion. So we will study about the haloarenes na, in maybe tomorrow's lecture. So see, the chemical reactions of haloalkanes, we will study these in three categories just to make them simpler to understand. So these three categories will be nucleophilic substitution, elimination, and the third one is the reaction with metals. Okay. So I'm sure you must have studied the nucleophilic substitution and the elimination reaction in class 11 when you study different kinds of mechanisms. ठीक है, but nevertheless I'll try to explain you from the basics only कि क्यों होते हैं और कैसे होते हैं. So these are the three categories and we are starting with the first category in detail. ठीक है, so what we are studying is under the nucleophilic substitution one. Fine. So first of all, let's understand what this mechanism says, what this reaction says. So what are nucleophiles? Initially, in the previous lecture, I told about the electrophiles, and electrophiles are the species which are like we are talking about the nucleophiles. The nucleophiles are the species which are rich in electrons. I mean, they have more of electrons, so it is like the negative charge would be there in these species, and because of the excess of electrons, and so they attack the part of the substrate molecule which is electron deficient. I mean electron deficient मतलब electron की कमी होगी उनके पास shortage होगी, and so
that part of that substrate molecule will be positively charged or partially positively charged. ठीक है. In the case of electrophiles, it was just the opposite. Electrophiles, they were the electron deficit species, and so they attacked the part of substrate which was electron rich. तभी तो we had discussed, no, if you remember, let me just show you that we had the benzene ring, and we had discussed that because of the resonance, the ortho portion and the para portion, it is electron rich, and only because of this thing, the electrophile it attached to these two positions and not to the meta position. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होता है. So just the opposite case. What are nucleophiles? Electron rich species. And so what is the general scheme for this reaction? We represent nucleophiles by Nu minus just to show that they have the negative charge. ठीक है, मतलब more of the electron. And this is a alkyl halide. I mean, these are the three bonds, and this is the X bond. So now we also discussed that because of this large electronegativity difference between the carbon and the halogen atom, this ये जो CX वाला bond होता है, this CX bond is polarized, and so polarized मतलब separation of charge हो जाता है, क्योंकि X जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन. इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो that will try to attract the electrons towards itself. ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उसको. एंड बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी, ये जो X है इट डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड ये जो कार्बन है इट डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो नाउ व्हेन अनदर न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज के साथ में है, when it comes and like when it is approaching this molecule, तो क्या होगा कि ये जो NU होगा ये आके यहाँ पे अटैच होगा. किसमें अटैच होना चाहिए आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, लाइक विच ऑफ द एटम, लाइक द कार्बन एटम और द हाइड्रोजन एटम. सो ऑब्वियसली वी नो दैट द नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, the negative charge will get attracted to the positive because the unlike charges जो होते हैं ना they attract, and the nucleophiles they attack that part which is electron deficit. So here carbon atom is electron deficit, so nucleophile आएगा और carbon atom पर attach हो जाएगा आके. ठीक है, तो जो हमारे पास product आएगा वो क्या आएगा, this is C, these are some other three bonds, and this is Nu. मतलब वो X को रिप्लेस कर देता है. ठीक है, और we get the halide ion over here. ठीक है, so this was the nucleophilic substitution. इसे nucleophilic substitution क्यों बोलते हैं, because one nucleophile is coming and it is replacing the another nucleophile which is already attached to the carbon. उसको रिप्लेस करके वो खुद कार्बन से अटैच हो रहा है and it is forming a new compound. ठीक है, so that is why this reaction is known as a nucleophilic substitution reaction. Now this was a general reaction that we talked about. अब कौन कौन सी स्पीशीज जो होती हैं वो एक्चुअली में जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती हैं एंड रिप्लेस कर देती हैं हैलोजन को. ठीक है, तो वी विल स्टडी अबाउट दीज स्पीशीज. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग लाइक फर्स्ट व्हाट रिएजेंट हैज टू बी यूज्ड. वो रिएजेंट जो है वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे व्हाट इज द प्रोडक्ट. ठीक है, सो आई एम फॉर्मिंग अ टेबल काइंड ऑफ थिंग. सो इफ वी यूज NaOH एज अ रिएजेंट, और NaOH है तो वी कैन ऑल्सो यूज KOH, मीन दे आर नॉट वेरी मच डिफरेंट. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है दैट इज OH माइनस दिस. ठीक है, हाँ पीपल राइट इट दिस वे, बट आई मीन ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना ये O के ऊपर होता है, सो जस्ट ट्राई टू राइट इट दैट वे. और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, उस कार्बन में आके OH अटैच हो जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट इज
ये हमारा एल्काइल ग्रुप है एंड यहाँ पे आके OH से अटैच हो गया, तो दिस इज अल्कोहल। ठीक है, सो द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी लर्न टुडे इज the that how can we prepare alcohol using the alkyl halide। ठीक है, अभी तो बहुत सारी हैं, just let's see। then we use water as this reagent। ये जो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है ये भी OH माइनस होता है एंड यहाँ से भी we will get alcohol similar। ठीक है, now if we use NaOH की जगह पे, मतलब H की जगह पे we are using some other alkyl group, कैसा भी हो सकता है, NaOR prime। so what we will get is this is R prime O, this is the nucleophile एंड यहाँ पे what we will get is ROR प्राइम। बस कुछ नहीं किया है दैट, बस यहाँ पे H की जगह पे R प्राइम लगा दिया है, मतलब H है या फिर कोई और दूसरा एल्काइल ग्रुप है, काम वैसे ही होगा, लाइक द मैकेनिज्म वुड बी एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट था वो H की जगह पे R प्राइम आ जाएगा। बट दिस कंपाउंड इज नॉट कॉल्ड अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल्स वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH माइनस एज अ पार्ट ऑफ देम। सो इस ग्रुप को वी कॉल इट एज ईथर whenever we have two alkyl groups or and they are attached to a oxygen atom। Now whenever we have NaI as a reagent, it will provide, like it will get Na plus and I minus, so we will have I minus as the nucleophile and similarly this alkyl group it will get attached to Ri। Okay, so this is iodide as you all know, another alkyl halide। So you must have remembered that this is a special named reaction, and if not, then you must see your notes। If we have NH3 or ammonia as a reagent, so it will the nucleophile as NH2 minus। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, R NH2 एंड ये वाला जो NH2 होता है इसको बोलते NH2 ग्रुप, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज अमीन। ठीक है, एंड नाउ यही अमोनिया की जगह पे अगर हमने क्या किया कि एक H को दूसरे एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, क्या होगा, सम एल्काइल ग्रुप विच इज R प्राइम और ये वाला NH2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, NH R प्राइम एज द न्यूक्लियोफाइल और बनेगा क्या, R NH R प्राइम। नाउ दिस इज ऑल्सो अ अमीन, बट क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, या फिर यू कैन से कि जो नाइट्रोजन है वो दो कार्बन एटम से अटैच्ड है एंड इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन। इस वजह से ये वाला जो अमीन है इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन। जैसे हमने पढ़ा था कार्बन के लिए, कार्बन में क्या किया था, लाइक वी लर्न दैट व्हेनेवर दैट कार्बन इज अटैच्ड टू वन अनदर कार्बन वो प्राइमरी हो जाएगा, इवन इट इज अटैच्ड टू अदर कार्बन वो सेकेंडरी हो जाता है। सिमिलरली कार्बन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये प्राइमरी अमीन ये वाला जो होता है दैट इज 1 डिग्री एंड दैट मीन शॉर्ट 1 डिग्री अमीन। सिमिलरली फॉर दिस केस secondary primary, secondary and tertiary, so tertiary amine will also be there, you can write it down on your own। We are moving on to the next compound। so when our reagent is KCN, potassium cyanide, तो ये जो KCN होगा ये क्या देगा, K प्लस और CN माइनस। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, CN माइनस। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द लोन पेयर। ठीक है, तो अब हमें क्या बनेगा, RCN, सिंपली R के साथ में CN। ठीक है, सो दिस इज नोन एज नाइट्राइल। ये जो कंपाउंड होते हैं इनको नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल, RCN। ठीक है, बट इफ वी रिएक्ट दिस विद AgCN, व्हाट वी गेट इज CN माइनस RNC and this thing is known as isonitrile।
Now you guys must be thinking that like in दोनों में compounds में दोनों ही reagents में CN group है CN minus as a nucleophile. But again, why are we getting two different things? Like it is nitrile and it is isonitrile. So I will discuss this separately after this. These examples they are finished. So then this is KNO2. This is a single or double bond. This is NO2 group as a nucleophile. And then हमारा जो product क्या बनता है? Double bond O. This is nitrite. ठीक है. और जैसे सिमिलर ऊपर था यहाँ पे AgNO2 से अगर if we use the reagent as AgNO2 then what we get is हमारा जो nucleophile रहेगा that would be this is the negative charge over N and इसको जो बोलते हैं that compound is known as nitroalkene. ठीक है. So see what's the difference is nitrile and isonitrile. इसमें alkyl group से when the this alkyl group is attached to the C carbon atom then it is known as nitrile. When this alkyl group is attached to the nitrogen atom then it is known as isonitrile. Similarly यहाँ पे भी है when it is attached to O the oxygen atom of this group then it is known as nitrite. और जब when this alkyl group is attached to the this nitrogen atom it is known as nitroalkene. Then coming to the acids. You must have now understood that what actually is happening. We just have to see कि कौन सा जो है वो positive है कौन सा negative है and the negative one is the nucleophile and it will simply get attached to the alkyl group वाला carbon. Now this compound is known as esters. ठीक है. LiAlH4 it will give hydrogen. We can get RH that is a alkene. मतलब अगर हमें alkyl halide से alkene बनाना है वापस how can we make it? How can we manufacture it? Or we can we will just use this reagent LiAlH4 and so we can simply get the alkene. Okay. So this was all about the nucleophilic substitution reagents, like what all we can use to get the product. Okay. Now I told you that I'll explain you about the CN and the NO2 group. So see, these species they are known as ambident nucleophiles. And what are these? These are the groups which possess two nucleophilic centers. मतलब nucleophilic centers मतलब the centers of electrons in axis जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो एक जगह पे नहीं रहता वो दो एटम्स पे रहता है एंड इसी वजह से बोथ दीज एटम्स दे हैव द चॉइस कि वो लाइक बोथ दीज एटम्स दे हैव द चॉइस टू गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम और वो रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला एटम जो है दैट विल गेट अटैच टू द कार्बन और वो कौन सा कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है. So just to write it down, they have two nucleophilic centers. ठीक है. तो उसके examples हैं the cyanide and nitrite. So first we will discuss cyanide. So what happens is the structure of cyanide is quite complicated because of resonance. I mean it is seemingly it seems very simple
कि सी है और एन है और बीच में डबल बॉन्ड है एंड एन हैज अ लोन पेयर, बट दैट इज नॉट द केस. This because of this lone pair, though this n is having a lone pair, right? So because of this lone pair, resonance हो जाता है. And when resonance happens, you know that several structures they are possible. So this CN molecule, na, it is a hybrid of two contributing structures because of resonance. So एक structure तो ये होता है and जब resonance होता है तो ये भी possible है. ठीक है. तो एक में क्या हो गया कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है और ये नेगेटिव है और जो लोन पेयर है वो दैट इज ओनली नाइट्रोजन आइटम. ठीक है. एंड इन द सेकंड कंपाउंड if the lone pair has come to the it has been transferred, it has come to the carbon atom and there is only a double bond involved. ठीक है. तो what happens is, अब see, when when the reagent is in this first form, ठीक है, मतलब the negative charge is on the carbon atom. ठीक है. So obviously when the negative charge is on the carbon atom और alkyl halide आएगा, so this carbon will get attached to the carbon which is attached to the halide ion. So इस वाले केस, पहले वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव जिसके भी ऊपर होगा ना, दैट एटम वुड बी अटैच. तो ये वाला कार्बन इसमें अटैच होगा और इस वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, सो इसमें नाइट्रोजन में अटैच होगा. ठीक है. जो इसका जो प्रोडक्ट होता है उसे साइनाइड बोलते हैं एंड दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड. एंड हाउ डू वी राइट दिस? हमारा जो प्रोडक्ट होगा दिस इज आर, क्योंकि वो कार्बन से अटैच हो रहा है तो वी विल राइट इट एज आर सी एन, पहले सी लिखेंगे. एंड यहाँ पे क्योंकि वो नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है सो वी विल राइट इट एज आर एन सी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नाइट्राइट ग्रुप. So here also the group is as follows. N has a lone pair and this is a double bond. Fine. Now here also there are two chances. या तो that carbon the alkyl group will get attached to this oxygen or it can get attached to the nitrogen. So here also if the linkage is through nitrogen atom, then what we get is nitroalkene. ठीक है. And similarly, if the linkage is through oxygen atom, this oxygen or this oxygen, so because of resonance, this negative, this, I mean, if you make the resonance structure, ऐसा हो जाता है, डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, सिंगल बॉन्ड उधर चला जाता है. ठीक है. ऐसे एंड लोन पेयर ओवर हियर. ठीक है. तो दिस डबल एंड सिंगल बॉन्ड इट इज एक्सचेंजेबल, इंटरचेंज करा सकते हैं. And when it is attaching to the nitrogen, then it is known, oxygen, it is known as nitrite. So दोनों like for the formation of both either of the two compounds, we have different kind of reagents which are mentioned in that table. So depending कि हमें क्या product चाहिए, we will use that reagent. Okay. So this was all about the examples. Now we will discuss the mechanism, like how the nucleophilic substitution reaction happens. The backend में क्या हो रहा है, कैसे bonds बन रहे हैं, कैसे bonds टूट रहे हैं, break हो रहे हैं, कौन सा compound कैसे आके attach हो रहा है. So this is the backend mechanism. See, so the mechanism involving the nucleophilic substitution, it is of two types in these cases. So you must have studied it like SN1 or SN2. ये आप लोगों ने क्लास 11th में शायद पढ़ा हो. But I'll explain this here. So first we are going to talk about SN2 reaction. So it is nucleophilic substitution for SN and 2 का मतलब होता है bimolecular. So we simply call it as bimolecular nucleophilic substitution. ठीक है. SN2 बोलते हैं short में. So this kind of mechanism happens when a reaction follows a second order kinetics. Second order kinetics मतलब जब
you must be remembering no that whenever some reaction like suppose करो A plus B gives C plus D, this is a reaction, and whenever we write the rate of this reaction, इसका जो rate होता है that involves the rate constant and some concentration of A, some concentration of B, because these are the reactant to the power alpha to the power beta. So these alpha and beta, they are known as the order of the reaction. ठीक है? So overall order कितना होता है इसका? Alpha plus beta is the overall rate of the overall order of the reaction. Now bimolecular मतलब कि when a reaction is following a second order kinetics. second order kinetics मतलब जब उसका order जो है वो 2 होता है. ठीक है? तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब इसका ऑर्डर इज 2. अब 2 कैसे आया? ये 1+1 हुआ ना. सो दैट मीन्स कि जो रेट है ना दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स. वी हैव टू रिएक्टेंट्स. वन इज द alkyl halide and another is that reagent that contains the nucleophile group. So these two reactants, इन दोनों के concentration पे डिपेंड करता है रेट. दैट इज व्हाई इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है? तो let me write down the general mechanism. Suppose this is the nucleophilic group. I'm starting with the simplest example. This is the alkyl halide, and what happens is I'll write it down and then I'll explain you clearly. Okay. This is the dashed line. This is the carbon. Again, a dashed line, fluorine. This is the alcohol and this is the chloride ion. Okay. So we are getting the products as the alcohol and the fluoride ion. Now, abhi, like whenever we see this mechanism, it seems that the reaction is taking place in 2 steps. ठीक है? पहले step में क्या हुआ कि the bond between the carbon and the halide ion is breaking down, and in the second step what we get is that the bond between the nucleophile and the carbon atom is forming. ठीक है? देखने में तो ये ऐसे ही लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, but actually in the case of SN2 what happens is both these processes, the bond formation and the bond breakage, both these processes will take place simultaneously in a single step. मतलब 2 स्टेप हो ही नहीं रहे हैं, जो हो रहा है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, and that is why no intermediate is formed. So we do not get any kind of intermediate in the SN2 reaction. ठीक है? In the reactions following SN2 mechanism. अब ऐसा क्यों होता है? So I'll explain this in detail. कि like जब आप देखो कि ऐसा समझो टू अंडरस्टैंड इट मोर इजिली कि अभी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है एंड न्यूक्लियोफाइल पास में आ रहा है पूरे मॉलिक्यूल के, एंड व्हेन इट इज कमिंग क्लोजर और व्हेन इट इज अप्रोचिंग दिस एल्काइल हैलाइड एटम एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, व्हाट हैपेंस इज कि एक ही स्टेप में धीरे धीरे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड. आई मीन इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट कार्बन एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड इट इज वो थोड़ा थोड़ा बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो गया है, और एट द सेम टाइम उसी टाइम पे जो क्लोरीन के साथ में बॉन्ड है वो धीरे धीरे करके ब्रेक हो रहा है. ठीक है? तो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, और जो OH और कार्बन का बॉन्ड है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. ठीक है? लेकिन अभी भी कोई बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है और कोई बॉन्ड पूरी तरीके से फॉर्म भी नहीं हुआ है. ठीक है?
तो ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल मैंने पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी बनाया है ना, तो दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ये बीच का स्टेट होता है जो ये एक ही स्टेप में दोनों चीजें हो रही हैं। एंड इसी वजह से वी हैव मेड द डैश्ड बॉन्ड, दिस डैश्ड लाइन इज सिंपली मींस कि जो बॉन्ड है ना, ये ना ये पूरी तरीके से बॉन्ड है, आई मीन इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं है और ना ही अलग हुए हैं। ठीक है, so now you can see here clearly that this carbon now it has five bonds. ठीक है, भले ही ये पार्शियल है बट वी आर काउंटिंग इट एज फाइव। तो दिस कार्बन के पास में पांच चीजें अटैच्ड है, it has five things which are attached to this carbon atom, so that is why this transition state is very unstable। क्योंकि स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन शुड हैव फोर, like four substituents they must be attached to the carbon। ठीक है, और it might be three substituents and one double bond। ठीक है, तो फोर बॉन्ड शुड बी देयर, बट हियर वी हैव फाइव एंड सो दिस इज वेरी अनस्टेबल, दिस इज वेरी अनस्टेबल। और इसको आइसोलेट कर पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई मीन इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू आइसोलेट दिस ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, सो ये तुरंत बनता है और तुरंत खत्म हो जाता है, दैट मीन। ठीक है, बहुत अनस्टेबल होता है, जैसे ही बना वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वाई आर वी इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग दिस, बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो रेट है कि वो दोनों चीजों पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में हमें दिख रहा है कि वो न्यूक्लियोफाइल भी है और हमारा अल्काइल हैलाइड भी है। ठीक है, हमारा सबस्ट्रेट भी है हमारे पास और न्यूक्लियोफाइल भी है। इसका मतलब है दैट इज द रीजन व्हाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज टू, क्योंकि दोनों ही इन्वॉल्व है ट्रांजिशन स्टेट में, तो दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, अब अगर और डिटेल में इसको एनालाइज करें, सो व्हाट द थिंग इज कि ये जो थ्री सी एच बॉन्ड्स है ना, सी एच वाले जो बॉन्ड्स है थ्री, ये जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आता है ये बॉन्ड्स जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल से दूर जा रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब आके अटैच होगा कार्बन से, थोड़ा पार्शियली अटैच होगा, बोलेंगे पार्शियली अटैच होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, तो ये जो तीन हाइड्रोजन वाले एटम्स है ना ये दूर जाएंगे, उससे रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, क्योंकि जगह बनाएंगे ना न्यूक्लियोफाइल के आने का, तो दूर हटेंगे एंड दे ऑल कम इन अ सिंगल प्लेन। पहले जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, सी एच वाले जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल प्लेन में नहीं होते, वन बॉन्ड इज इन द प्लेन, वन बॉन्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड वन देन द थर्ड वन इज कमिंग इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं ना वो सिंगल प्लेन में हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो अटैच हो जाता है और सीएल हट जाता है, ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फिर से उल्टी हो जाती है। आई मीन अगर को मैं बना लाइक आई विल शो इट बाय विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। कि देखो पहले सपोज करो पहले क्या था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड दिस सीएल। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारा OH वाला न्यूक्लियोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग, और जब वो धीरे धीरे यहाँ आ रहा है, मान लो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब उसको अटैच होने के लिए जगह चाहिए ना, तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं ये उसको जगह देते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज धीरे धीरे करके यहाँ पे आके ये पार्शियली अटैच होगा, सीएल भी पार्शियली अटैच हो जाएगा, बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और अब क्या होता है कि ये एच, ये एच, ये एच सिंगल प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब सीएल हट जाता है तो उनके पास यहाँ पे लाइक इधर पे जगह हो जाती है एंड OH हैज टू गेट अटैच्ड, तो OH को और जगह चाहिए पूरा अटैच होने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है, दिस इज द H, जब सीएल हटेगा तो और OH जो होगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द कंप्लीट मॉलिक्यूल, कंप्लीट इन द सेंस कि अभी जो है कोई भी बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सारे बॉन्ड जो है वो जो OH है वो कम्प्लीटली अटैच हो चुका है और सीएल जो है वो हट चुका है।
सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो प्रोडक्ट बना है और जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आई मीन द कॉन्फ़िगरेशन हियर मीन कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एक कार्बन के अराउंड एटम्स जो है वो कौन कौन से डायरेक्शन में लगे हैं, कौन कौन से एटम हैं कौन से डायरेक्शन में लगे हैं, कितने एंगल पे लगे हैं। सो वट एवर अरेंजमेंट इज देयर दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो हियर इफ यू सी द हाइड्रोजन एटम्स इन द केस ऑफ द रिएक्टेंट, they are on the left hand side and in the case of product they are on the right hand side. So exactly ऐसा ही होता है in the case of SN2 reactions में, because of this partial bond formation and partial bond breakage. ठीक है, with this transition state formation की वजह से ही ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये मिरर इमेज काइंड ऑफ थिंग बन जाता है कि पहले कुछ और होता है और बाद में कुछ और हो जाता है। ठीक है, सो दिस ये जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है इसे इन केमिकल टर्म्स, इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स वी से इट एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सिर्फ SN2 में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी विल स्टडी, अभी इसके बाद वी विल गो ऑन टू द SN1 रिएक्शन। ठीक है, एंड वी विल सी देयर कि उसमें जरूरी नहीं है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो, बिकॉज उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एंड whenever the intermediate is formed then that's the choice of the atom, that is choice of the nucleophile कि वो। ठीक है, सो inversion of configuration may happen and may not happen, but here in case of SN2 it is all it is always observed. ठीक है, तो this was all about the mechanism and the inversion of configuration. Now one more thing that we'll have to understand here is the order of reactivity. I mean, जो halides भी होते हैं ना, we learned that there are three kinds of halides: 1 degree, 2 degree and 3 degree, depending upon the number of carbon atoms. मतलब I'll just draw it because देखो यहाँ पे जो Cl है that is attached to a carbon, and इस कार्बन से कितने कार्बन एटम्स या फिर कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो अगर दैट halogen is attached to the primary carbon, then that is known as a primary halide, and if it is attached to a tertiary carbon, it is known as a tertiary halide. ठीक है, तो we'll see कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे चेंज होता है। So let me draw, then I'll explain. Suppose this is a 1 degree halide. ठीक है, this is the Cl group, this is C, and यहाँ पे मैं H एटम्स को ऐसे शो कर रही हूँ, जस्ट टू शो कि ये छोटे छोटे लाइक दीज हाइड्रोजन एटम्स, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, राइट? सो आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन दिस वे। दिस इज द प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी हैलाइड, सो द कार्बन हैज टू बी सेकेंडरी, मतलब एक और कार्बन ग्रुप अटैच होगा या फिर एल्काइल ग्रुप अटैच होगा और दो हाइड्रोजन होंगे। सो दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज सम अदर बिग ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज, क्योंकि कार्बन जो है वो एक उससे अटैच है, सो दिस इज 1 डिग्री। दिस इज अ सिंपल हैलाइड। I mean, I'm sorry, I said I discussed this as a primary one, but this is the primary one. When you have one hydrogen and two groups, these are two big groups. Okay, this is 2 degree, and similarly for the 3 degree. Okay, so this is 2 degree. So now we can say that the presence of the bulky substituents near the carbon atom, it has a inhibiting effect. Inhibiting effect मतलब कि अगर देखो here in the first one what happens is we have only three little groups which are attached, three little hydrogen atoms which are attached to the carbon. तो if the nucleophile यहाँ पे पास में आता है इसके, तो इसके पास बहुत like it is getting a lot of space to get attached here. ठीक है, and Cl will get removed. And if talking about this tertiary, ठीक है, this 3 degree, suppose the nucleophile is coming, is approaching this carbon, this molecule, and you can clearly see कि there is a shortage of space. मतलब if the nucleophile is suppose कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो it is getting a very less space to get attached to the carbon atom over here. ठीक है,
तो अगर यहाँ से इस साइड से अप्रोच भी करता है तो उसे स्पेस नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज of this shortage of space because of these bulky groups which are present around that carbon, ये hindering effect, मतलब ये hinder कर देता है formation of this bond, and so this is known as the inhibiting effect. So there is a shortage of space. This is known as inhibiting effect. Okay. So that is the reason. So हमारे tertiary alkyl halides, they are the least reactive in the case of SN2 mechanism. And these, ये जो simple methyl halide है, this methyl जो first वाला है, this methyl halide, it is the most reactive in the case of SN2, only because of this reason. But of like we can say, so if we will write the order of selectivity, order of reactivity, we can say 1 degree wale is the most reactive, then 2 degree, then 3 degree is the least. Now the question here again, it should be coming to your mind that if अगर ये 3 degree, that if these 3 degree or the tertiary alkyl halides, they are the least reactive in these cases, then what happens, like if then how will they react? Because in the case of SN2 तो ये possible नहीं हो पाएगा, बहुत कम chances है कि product बने. So how will they react if they are using tertiary halide? तो क्या होगा product? So that we will discuss in tomorrow's lecture, because now ये जो tertiary वाले tertiary alkyl halides होते हैं, they follow SN1 mechanism. This SN1 mechanism we will discuss in the next lecture, and we will see that what are the differences in the case of products, or in the case of configuration, or in the case of this order of reactivity. And हम लोग ये भी देखेंगे कि in the case of SN1 there is the intermediate formation, जो कि SN2 में नहीं था. In SN2 we only get the transition state and not the intermediate. ठीक है? So this was all for the today's class, and tomorrow we'll discuss about the SN1 reaction, and then we'll move on to the other reactions. So thank you, class.